that is polymer formed by two or more monomers. For example, if A and B, these are the monomers, तो हम कहेंगे कोपॉलीमर्स बनाने का मतलब है, अब हम ऐसा भी बना सकते थे ए बी टाइप ऑफ पॉलीमर, तो हम बोलते दिस इज ऑल्टरनेट कोपॉलीमर. तो co-polymers are formed by more than two or more than two types of monomers. तो co-polymers में एक कैटेगरी हमारे पास है. One of the important category is alternate. Another can be AA, BB, AA, BB and so on. या फिर ऐसा भी हो सकता है AAAA, BBB, again AAAA and so on. अगर इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो तो हमें यहाँ पे ब्लॉक्स नजर आए. We can say there are blocks of A, blocks of B. इनको कहा गया ब्लॉक कोपॉलीमर. We can have block copolymer. And third category is AB, AB, AAB, ABB and so on. यानी कोई सीक्वेंस ही नहीं है, जो जहां आ गया जैसे आ गया बस लगता चला गया. तो we can say random copolymerization. This is random copolymers. So we have alternate copolymers, block copolymers, random copolymers. So these are the three types of copolymers possible. One of the important example is Buna S, and second important example is Buna N. Third is ABS. These are three important examples of copolymers. Buna S is made up of butadiene and styrene. It is a copolymer of butadiene and styrene. Buna N is a copolymer of butadiene and acrylonitrile. And ABS is copolymer of acrylonitrile for A, B for butadiene and S for styrene. It is a copolymer of acrylonitrile, butadiene and styrene. When we say butadiene is there and styrene, so these two are joined together and bonding is like this. अब देखिए दोनों मोनोमर्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and benzene. Both side chain is extended and this is a polymer. जैसे मैंने ये butadiene और styrene का कोपॉलीमर ड्रॉ किया, in the same manner you can draw for butadiene and nitrile or butadiene, nitrile and styrene.
All these can co-polymerize, leading to the formation of copolymers. So this is how we get copolymer formation. अब आप बना सकते हो ना एक्रिलोनाइट्राइल के साथ या फिर ABS बना लोगे. सिर्फ बॉन्ड्स को शिफ्ट करना है, उनको ज्वाइन करना है. हाँ जी बेटा. ओके बेटा. इसको बोर्ड पे पूरी ऐसे कर दो. हाँ ऐसे. ठीक है. अब ठीक है. So this is about copolymers. We are finished with the topic addition polymerization. यानी homopolymers और copolymers दोनों ही addition polymers हैं और दोनों में examples आपके पास हैं. आपको इन example में से कुछ explanations आ सकती हैं. You can write those. Next we have is condensation polymers. Next topic we have is condensation polymers. The next topic we have is condensation polymers. Condensation polymers are three in categories according to your syllabus. We have three categories of condensation polymers. One is nylons, second is polyesters, and third is resins. We have nylons, polyesters, and resins. When we say nylons, so nylons is New York plus London. From this we have the term nylon. Nylons are of so many types. We have nylon 6/6, nylon 6, nylon 6/10, nylon
to 6. The 4 types of nylons are there in common. Polyesters, नाम से समझ आ रहा है, एस्टर लिंकेज इज देयर. 2 types are there. The polyesters are having ester linkages. One is your terylene, another is glypton. Resins are 2 in number. One is phenol formaldehyde resin, phenol formaldehyde resin. Second is melamine formaldehyde resin. Third is urea formaldehyde resin. All resins are cross-linked polymers. These are cross-linked and thermoplastic, thermosetting. Cross-linked and thermosetting by nature. Polyesters are fibrous. These are fibers having strong bonds. Hydrogen bonds are there, holding the fibers together. Nylons are again fibers. Nylons are basically polyamides. We are having polyamide linkage. These are polyesters. Polyester any large number of ester linkages. Our resins are cross-linked polymers. 3 are in number. First we'll start with nylons. Now we'll start with nylons. And first example is nylon 6,6. Nylon 6,6 is having 2 monomers. One is of 6 carbon, another is again of 6 carbon. That's why it is called 6,6. Why it is nylon 6,6? Because there are 2 monomers of 6 carbon each. These 2 monomers are, one is 6 carbon dioic acid. 6 carbon dioic acid is hexane 1,6-dioic acid. We can say it is hexane 1,6-dioic acid. This is also named as adipic acid. And another is 6 carbon diamine. When we say 6 carbon diamine, it is called hexane 1,6-diamine or hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine. Beta methylene is CH2. The hexamethylene is 6 times CH2 and diamine. The 2 monomers of nylon are, one is dioic acid, another is diamine.
Both are having 6 carbons, that's why it is 6, 6. We can write these two as, we can write CH2 4 times, COOH, COOH. क्या आप समझ पा रहे हो? ये एडिपिक एसिड है. Yes, ma'am. And hexamethylene diamine can be written as CH2 6 NH2 NH2. This is your hexamethylene diamine. अगर ये दोनों मोनोमर्स आपस में कंडेंस किए जाएं तो वाटर इज एलिमिनेटेड एंड वी गेट कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन. माइनस वाटर, दैट मीन्स कंडेंसेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. तो बेटा ये बन जाएगा CH2 4 CO NH CH2 6. फिर मैं NH लिख रही हूं क्योंकि एक H अब फिर चला जाएगा, और इस साइड पे मैं लिख रही हूं CO और OH फिर चला जाएगा. एंड दिस इज रिपीटेड फॉर N टाइम्स. इट विल बी नाइलॉन 6,6. ये अब आपका नाइलॉन 6,6 पॉलीमर है. नाउ दिस इज नाइलॉन 6,6 फॉर्म्ड. That is the first nylon we are finished with. It is nylon 6,6. Second nylon we are going to start is with nylon 610. तो 6 और 10, 6 10 is 6 and 10 कार्बन्स कंपाउंड. बेटा 6 वाला तो अभी भी वही है, अमीन. यानी अमीन इज स्टिल ऑफ 6 कार्बन. हेक्सामिथाइलिन डायमीन, नो चेंज, सब कुछ वैसा ही था. लेकिन एसिड इज ऑफ 10 कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड सिबिसिक एसिड. पहले क्या था? एडिपिक. And now it is sibicic. It is sibicic acid, decane 1,10-dioic acid. The nylon 610, 2 monomers are. One is hexamethylene diamine and second is sibicic acid. Polymerization is exactly same. आपने नाइलॉन 6,6 नोट कर लिया सबने? तो ये नाइलॉन 610 आप बना सकते हो. So this is nylon 610. मेरे लिए तो बहुत आसान था बेटा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा. So now it is CH2 8 times. 8 plus 2 is 10. 8 plus 2 is 10. Same side acid के इधर extension, NH के इधर extension नजर आएगी आपको. तो we get nylon 610. ये था जिसका मैं क्वेश्चन छोड़ के आई. ये था एग्जैक्ट. आदमी
Next is nylon 6. Only one monomer, and that monomer is of 6 carbon. Nylon 6 is having one monomer of 6 carbon, having one side amine, another side acid. We can say it is 6 amino hexanoic acid. 6 amino hexanoic acid is the monomer. It is also named as, this is alpha, beta, gamma, delta, omega. I'll just write alpha, beta, gamma, delta, omega. So we can write it is omega amino hexanoic acid. It is also named as caproic acid. The nylon 6 monomers are hexanoic acid with amino group, 6 amino or omega amino or caproic acid, all are same. And now this monomer is to be repeated again and again. Now we can write it as 5 carbon in the middle, one is acid, another is amine. Again one more acid, 5 carbon, NH2. One water is eliminated, amide linkage, condensation. Polymer formed is NHCO, CH2, 5. NH और एक बॉन्ड इधर से खाली हो जाएगा, CH2, 5, C डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड यहाँ से empty. N टाइप्स नाइलॉन 6. आपने देखना है एसिड का OH हटाते रहना एक साइड से और इधर से NH2 का H. तो we get condensation continuously going on, leading to the formation of nylon 6. But a nylon 6 is important because we start its formation from cyclohexane. Oxidation of cyclohexane is leading to cyclohexanone. Cyclohexanone is allowed to react with hydroxylamine. We get formation of cyclohexane oxime formation. This oxime with PCl5 or P2O5 is going for Bachmann rearrangement. Bachmann rearrangement, and we get formation of a 7-membered ring of amide. This amide is called caprolactam. This caprolactam is not stable, and in acidic medium or in water presence, it will open up, leading to the formation of your caproic acid. Now we get caproic acid, and that caproic acid is polymerized, condensation, polymerization, condensation,
polymerization, nylon 6 is formed. तो एक्चुअल में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो ये कि नाइलॉन 6 का नाम कैप्रोइक एसिड से क्यों बना, क्योंकि वो कैप्रोलैक्टम से बना हुआ था, इसलिए इसको बोला गया कैप्रोइक एसिड. व्हाट इज कैप्रोलैक्टम? 7-membered ring having amide in it. 7-membered है बेटा. नाइट्रोजन इज आल्सो काउंटेड इन द चेन. हाँ जी बेटा. रीअरेंजमेंट PCl5 और P2F5 की प्रेजेंस में होती है ना. Bachmann rearrangement is possible in presence of PCl5 और P2O5. ठीक है. Bachmann rearrangement फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं या PCl5 ऐड करते हैं, तो दैट इज Bachmann rearrangements. कर लिया नोट सबने. Bachmann rearrangement and all. Oximes can go for a rearrangement called Bachmann rearrangement. और उस rearrangement के बाद आपको एक ring like structure मिलेगा, और वो जो ring like structure बनता है उस ring like structure में amides बनते हैं. ये ध्यान रखना है कि oxime on Bachmann rearrangement is leading to the formation of amide. Substituted amide बनते हैं. Substituted amide मतलब end पे भी कुछ लगा होता है. नेक्स्ट इज नाइलॉन 2,6. नाइलॉन 2,6 में अंडरस्टूड है एक 2 कार्बन का यूनिट और एक 6 कार्बन. 2 मोनोमर्स अगेन. देर आर 2 मोनोमर्स. One is 2 कार्बन, another is of 6 कार्बन्स. बेटा जो 2 कार्बन का है उसमें एक कार्बन पे NH2 और दूसरे पे एसिड, और ये एक अमाइनो एसिड है. लेकिन कौन सा अमाइनो एसिड? दिस इज ग्लाइसिन. और ये बायोलॉजी से हमारे पास है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स में ये होता है. तो ग्लाइसिन इज देयर, 1 मोनोमर. और सेकेंड में भी आप एक साइड पे एसिड लगाओगे और एक साइड पे NH2.